Hi Satyam. Hello. I'm audible. Hello. Like you can use the chat if you want. I'm audible. Yeah. Hi Satyam. वॉइस आ रही है? दिस इज वॉइस आ रही है मेरी? हेलो. Hello. I'm audible now. Okay. I guess you can use the chat. Like if. What? Okay. So you can use the chat if there is any issue with the sound. I guess from my. Satyam, can you hear me now? Hello, hello, yes. Okay. 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 Yeah. Yeah. We can. We'll start now, right? Okay, so like starting with what we have already done, let's just have a look for it. So we already configured a server, just template was there, view models. Okay, then we had controllers. Also, we in the last session we kind of develop APIs. Okay, that is for appointment, and then we have APIs working too. So we created this also. Um, okay, like today's class will be mostly focusing on, so we'll be covering all other things like one by one. Okay, so not whatever the functionalities are there, we'll be covering all of them. But what we'll do in the meanwhile is let's go to the authentication part, like how authentication happens. Okay, and how it is functioned, like what are the how do we deal with authentication and what are the ways we have. Okay, so we'll do that thing. Okay, and the meanwhile, I will be going through. So, let's talk about the manual authentication method.
okay, which we have, and then we can like proceed with our different like solid authentication strategy, which will be using passport anyways. Okay, so let's discuss about the manual strategy. So I will create a different git branch, okay, for that one. So I will say manual auth, okay, manual auth will be so, and we can check the branch. So this git branch management is like if you want to create a branch, okay. If you want to check the branch, you know which branch you are at, so you can just do this git branch command. Okay. Then the point is, how do we set up authentication manually? Okay, like without any libraries and all those sort of things. So how to do that part? Okay. So let's go through it. The point is, if I go to my admin route, okay. So if I go to my admin route, so we had a profile and login thing. Okay. Let's choose the doctor. Then in the doctor we have login, then we have sign up, then we have the profile. Okay, all these things are there. Now I want to assure that once the user is signed up, okay, once the user is signed up, uh, it it has not to authorize, like we do not need to authenticate him again till he does log out or sign out. Okay, first of the thing. Next thing comes the part is like authentication is made for all the routes we have. Okay, so what we mean by authentication basically is whatever functionality our app is having, that should be that should be performed by an specific user. Okay, so we shouldn't keep our routes public, like we shouldn't allow anyone to like do any functionality without setting up an identity. Okay, for example, let's say we cannot allow anyone to generate an appointment like without his identity. Obviously, if there is a patient whose identity is there, it means the patient database में है, so he can schedule appointment. अदरवाइज लेट्स से डॉक्टर के केस में सो कोई लाइक कोई पेशेंट डॉक्टर के राउट पे हिट करके उसको लाइक जनरेट रिपोर्ट या फिर यही सारी चीज़ें ना कर पाए. फॉर दैट वी नीड टू सेटअप ऑथेंटिकेशन. सो हमें राउट्स भी प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे उस केस में. So this is what we need to. So this is our idea, right? So this is our agenda which we have to do. So what we are going to create is some manual authentication. Okay, so without any libraries and other things. Okay, we'll see how it is being done, and then we'll move to our library, authentication library, which is basically passport.js. I hope that is making sense now. Uh, okay, is it clear, Satyam, till now what we are going to do? Okay. Okay, I will share the screen also. Is it visible now? Okay. So how do we do that part? How do we protect routes we want? Okay. How do we authenticate user, like these kind of things? Let's see that. Now, in case of sign up, जब भी sign up होती है, like identity establish करने का मतलब क्या है कि um, whenever we try to sign up, okay, so whenever we try to sign up, the identity is established. After that कोई भी action हो, for example अगर appointment create हो रही है या फिर report generate हो रही है, any type of action is there. Okay, so that should have a specific identity. ठीक है, so इसीलिए हम sign up करवाएंगे so that identity is established. Now how we are exactly going to do that देखते हैं. So let's pick the doctor sign up. ठीक है, डॉक्टर के राउट से चालू करते हैं authentication. So doctor sign up is here. ठीक है. Now I explained, not explained, maybe in stated that in last session, browser has some storages. Okay, browser has some storages we can find under application tab. Okay, if I come over here and I just see to the start, I have something called as cookies. Okay, I have something called as cookies. I have something called as local storage. We have session storage, index DB, web SQL, trust token, interest group. Like we do not like care about this one. All these three will be.
learning. Okay, local session and the cookies. IndexDB, if you want, like you can go on. WebSQL, obviously, it's totally on your interest. But currently, what we are going to use is the cookie. Okay, so cookies are a storage specifically for the browser. Okay, so it's specifically for the browser we have cookies. Okay, so specifically for the browser we have the cookies. Now, we do something like this. Okay, so document.cookie, it means our browser has access to the cookie. Okay, and I guess we can like do something like this, add and like add the values. Okay, we'll see that, we'll see that part. We'll move forward, but the point is I can store something here. Okay, and that will be whatever what I'm going to store will be the identity for my user. Whoever is going to sign up, that identity will be stored here. Identity can be any unique identifier. आप ईमेल स्टोर कर सकते हो, आईडी स्टोर कर सकते हो यूज़र की मोंगो डीबी से, ठीक है, एनी स्पेसिफिक फील्ड यू कैन स्टोर, अगर यूज़र नेम है तो यूज़र नेम में स्टोर कर सकते हो स्पेसिफिक यूज़र नेम। हाउ विल दैट वर्क, देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी दैट नाउ। ओके, we'll come to that later. um, let's see, in case of sign up, once we have signed up. Okay, so should I do it on sign up or login? Okay, be it login. We'll deal with that this one later. Let's do with login. Okay, now whenever I'm logging in, whenever I'm supplying my username and password, and that is correct. Okay, it means that email is also present and password is also there. Okay, in that case, I will store something into the cookie. Okay, store something into the cookie. Okay, let's try to do this. So the cookie asks for the name. Okay, let's write user ID. Okay, user ID. Also the value. Okay, what value we want to store. So I have I have the doctor document, and doctor has email. Okay, email is there inside doctor. Also we have MongoDB ID. So either we go with the ID or either we go with the email. Okay, so let's go with the ID thing. Okay, um, okay, let's do that. So I will say, so this is the document, right? Is email present? I should change the name, but yeah, anyways, like dot, I will say dot underscore ID. Okay, so this is the way I will get the ID. Whenever we say a response dot cookie, it means that we are sending instruction to the browser. ठीक है, जब भी आप रिस्पॉन्स सेंड करते हो तो आप रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स किसको भेजते हो, क्लाइंट को भेजते हो, राइट? तो कुकी की रिस्पॉन्स भी आप क्लाइंट को भेजोगे, इट मीन्स दैट यू आर डायरेक्टिंग द ब्राउजर टू स्टोर द कुकी विद द नेम दिस, विद द वैल्यू दिस इनसाइड इट्स कुकी फाइल। ठीक है, आप उस कुकी फाइल में इसको स्टोर कराना चाहते हो, इसकी और वैल्यू को। सो नेम एंड वैल्यू यू सी, domain we have, expiry date we are not using expiry date for now, but yeah, obviously we can use that also, and all those lot of things are there. Okay, so let's just focus on this part first. What I will say, let's do the doctor one. Okay, so let's sign in for the doctor. Okay, let me a close look at this part. Okay, we can see that we get the ID over here. Okay, now we are getting the ID over here. If I have a close look, the domain says this one, the name is there, the value is there. Okay, and obviously, okay, so we are also having this um, session thing. Okay, and then size we are, okay, we'll talk about this later. Okay, but we can see that we are successfully able to give instruction to the browser to set up this. Now that is fine, but what is the use? Okay, so we have done one part, that let's set up the, like, let's set up this part, that browser is having the identity, so that we do not have to log in again for any round. The point is, I want that only doctors should do this.
Okay, only doctor can accept appointment, reject appointment. Only doctor can generate. In order to do that, I need any identification, and that identification will come after logging in. And okay, but should I on every button click? Should I every time doctor login form? Hey, please log in. Then you will do the task. Log in and do the task. No, we in the real world we do not have something like this, right? So once you log in, you can do any operation you want till you log in. That is possible because of this cookie is stored. Okay, that thing is possible because this cookie is stored. Guys, is this make are you getting the point? ओके ऐसा भी होता है लाइक यू गो टू फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे आप गए एंड यू सर्च समथिंग ठीक है आपने कुछ सर्च किया फिर वो एड्स में आने लगता है कभी कभी फिर आप लाइक लेट्स से यू सर्च फॉर समथिंग एंड इट स्टार्ट कमिंग इन द एड्स दैट यू हैव सर्च फॉर दिस एड ठीक है तो हाउ इज दैट पॉसिबल तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि लाइक दे आर स्टोरिंग इनसाइड द कुकीज और उसको फेच करते हैं आपने कुछ विश लिस्ट में ऐड कर दिया तो वो विश लिस्ट से जाती नहीं ओके एंड इफ ओके फिर आप कहोगे सर ये तो डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं ना प्रीवियस लिस्ट के आइटम्स ओके द पॉइंट इज मैं कहूँ कि इफ़ यू हैव स्टोर्ड समथिंग इन द विश लिस्ट फिर आप कहोगे सर वो तो डेटाबेस में भी स्टोर कर सकती है यूज़र के रिलेशन बट कभी कभी ऐसा होता है कि सम वेबसाइट्स अलाउ यू टू विदाउट लॉगिंग इन यूज़ द विश लिस्ट तो वो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं कुकीज़ का अगर उनके पास आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो आपके ब्राउज़र में ही डेटा स्टोर करा देते हैं ठीक है कि ये प्रोडक्ट आपने विश लिस्ट में ऐड किया फिर आप अगली बार जब आप विजिट करते हो तो आपको वही दिखाते हैं कि प्लीज़ परचेज दिस वन ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज़ पॉसिबल ठीक है लिख तो दिया बट हाउ टू रीड इट ठीक है राइट पार्ट तो हमने कर लिया ठीक है अब रीड पार्ट की बारी है ओके सो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी डॉट ओके okay now we'll see how to parse this part okay and let me come over here okay आगे देखते हैं also when the doctor is going to generate the report which is basically not the profile I am specifically talking about the report where is it where is it book appointment nope get appointment no change appointment yeah okay so let's see this okay this is change appointment which is only be allowed by the doctor only the doctor can change the appointment changing appointment means वो उसको patient appointment book की ठीक है the patient has booked an appointment in the page we see okay in the page we see these are the appointments appointment report for appointment appointment report for appointment appointment and report for appointment okay now these are the appointments already present ठीक है so कुछ accepted है कुछ rejected है okay and maybe some would be pending but ये accepted rejected के केस में तो the point is इसको चेक करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा who is doing this now how to do that okay in the request okay एक ट्राई करते हैं okay let's try one और फिर देखते हैं इसको let's try to do something let's create a request. So I will accept the appointment which is already accepted, so no change. Okay, but I guess the request went through. Okay, request चली गई यहाँ पे. I can see that appointment status changed successfully, and let's come to header. Okay, ये हो गई आपके response. Whatever the response you are getting from the backend. Okay, ये हो गई response parse होके थोड़ी beautiful way में. Okay, so readable way में. दिस इज पेलोड मीन्स जो आप डेटा भेज रहे हो रिक्वेस्ट के साथ एंड दिस इज हेडर्स वेयर वी विल फाइंड ऑल द हेडर्स नाउ इफ यू केयरफुली लुक एट इट टेल मी which field is going through the request which is containing the user id कोई ऐसी फील्ड है जो जा रही है जिसमें यूजर आईडी हो रिक्वेस्ट हेडर में टेक अ क्लोज लुक and for your information
रिक्वेस्ट हेडर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ब्राउजर इटसेल्फ, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट हेडर नहीं बनाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्राउजर खुद भेज रहा हो, ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट होती है तो ये सारी चीज़ें खुद जाती हैं, ठीक है, these usually accept encoding, ठीक है, connection. You see this cookie, this is also going to backend. It means that we have a chance to authenticate the user, मतलब हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं उस यूजर। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो फिर पॉइंट है कि रिक्वेस्ट तो ठीक है, पैरम्स और क्वेरी, पैरम्स भी निकाला हमने, क्वेरी भी निकाली, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी निकाला हमने पोस्ट डेटा के टाइम। अब कुकीज कैसे निकाला? हाउ टू गेट कुकीज? द सेम वे, राइट? सो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, लेट्स ट्राई, ओके। तो ये रिक्वेस्ट डॉट कुकीज हमने की, एंड लेट्स सी दैट पार्ट। ओके, फिर से करके देखते हैं इसको। ओके, लेट्स रिजेक्ट दिस। ओके, now it is rejected. Let's come over here. Okay, so did it print request dot cookies? I guess no. Let's do a refresh. Okay, एक refresh करते हैं, फिर देखते हैं। Okay, now it should be doing this. Oh, I see. Let me put some text so that we can verify. It may be null or something. I don't know. Like, let's check it out first. Okay, makes sense. Okay, so this is not being printed, and why is that? We're calling this function, right? Okay, makes sense. Let's transfer this to. Remember, we created two functions, so maybe this function will be getting the part. Let's hide this one for now, and let's do the same thing again. So I'll reject this part. Check it now. Okay, so it says undefined. So request dot cookies, we are okay. So cookies are present in the request, but we are not getting the cookies. Now there is a solution for this. Okay, it's not that request is not having the cookies. It's not the point. The point is they come in some format which is like not that easy to read. Okay, not that easy to read. So we have a library for that. The name of the library is Cookie Parser. Let's check it out. Now, um, it says pass cookie header and populate a request.cookies with an object keyed by the cookie names. With an object, it says that cookie header. We saw the browser is sending the cookie in the header. Okay, it is saying that कि ये एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी है हमारे पास, राइट? रिक्वेस्ट की ऑब्जेक्ट है। ये कह रहा है कि कुकीज़ को हेडर में से निकाल के एक कुकीज़ नाम की कुकी को हेडर से निकाल के कैपिटल सी वाली, ओके ओके, इट विल ऐड इट टू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट कुकी, एक कुकी नाम की प्रॉपर्टी बनाएगा, उसमें सारे कुकीज़ को नेम्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पेयर वैल्यू से बना के इस ऑब्जेक्ट को, कुकी ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट में कर देगा, देन इट विल बी, फिर वो अवेलेबल होगा, राइट? ये कह रहा है कि ऑप्शन में मैंने इनेबल्ड साइंड कुकी सपोर्ट बाय पासिंग अ सीक्रेट स्ट्रिंग व्हिच साइंस रिक्वेस्ट डॉट सीक्रेट। ओके, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है, इसी कुकी पार्सर को हमें यूज करना है। सो लेट्स ट्राई दिस। सो installing the cookie parser, it is stored, ठीक है, फिर हमें ये cookie parser यूज करना है सो दैट वी गेट द कुकीज़ हेडर से निकाल के उसको रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ में हम
यूज़ कर पाए। और ये आया हमारा कुकी पार्सर। ओके, एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन जो हमें करना हो? कुकी पार्सर ओके, ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर, दैट इज़ इट। ठीक है, और आई गेस स्टार्ट। सो ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर, install the package, and we are using the cookie parser. So what is cookie parser exactly here? Cookie parser क्या है? It is a cookie parser is acting as a, yes, very correct. So that is the term I wanted to hear. It is a middleware. ये एक middleware, ठीक है? जब भी आप app dot use लिख रहे होते हो ना, maximum time that is a middleware. Express dot you are encoded middleware. App dot use cookie parser ये भी middleware. React dot router ये भी middleware, ठीक है? So whatever we have over here is middleware or middle. So what is the definition of middleware? Middleware क्या करता है? सो जो भी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आती है, इससे पहले डायरेक्टली कंट्रोलर पे पहुंचे और आप उस पर काम करो। इफ़ यू वांट टू रन सम फंक्शंस, फॉर एग्जांपल आप अपॉइंटमेंट वाली राउट को ही ले लो। सो अनटिल अनलेस आप उसको चेंज करने वाले हो, इससे पहले आप उसको चेंज करो। आपको ये वेरीफाई करना है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो आपको कि सर ये काम तो वहाँ भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। कुकी पार्सर भी आप वहाँ यूज़ कर सकते, बट द पॉइंट इज व्हेन यू क्रिएट अ कंट्रोलर, वो काफ़ी स्पेसिफिक काम करता है। कंट्रोलर का मतलब होता है कि जिस काम के लिए वो बना है वो सिर्फ वही काम करता है, ठीक है? तो जब आप लॉगिन कंट्रोलर लिखते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होना चाहिए, लॉगिन करना। उसके अलावा उसका और कोई काम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई दीज काइंड ऑफ फंक्शंस, ऑथेंटिकेशन हो गया, फिर यूआरएल जो भी रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है उसको पार्स करना, ओके, जो भी कुकीज़ हेडर में आ रही हैं उसको पार्स करना, तो ये सारी चीज़ें आप मिडिलवेयर से करा रहे होते हो, राइट? वो आप उसको खुद नहीं लिखते। ओके, अब देखते हैं कि अभी तो नहीं आया, अभी तो अनडिफाइंड आ रहा था, राइट? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट कुकीज अभी तक नहीं आ रहा था बिकॉज हमने मतलब वो पार्स ही नहीं हो पा रहा था। द पॉइंट इज, ओके, लेट्स चेक अब ये पार्स हो रहा है कि नहीं। ओके, सो लेट्स गो टू 8000, here's डॉक्टर, ठीक है? ये आया डॉक्टर, देन 1 2 3 4, ओके, लेट्स हिट एंटर, ठीक है? आप आए। Now the point is, let's okay, let's do this part, ठीक है? अभी एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट हमने कर दिया, ओके। ऑल्सो लेट्स चेक दिस, ठीक है? नाउ वी आर गेटिंग द यूजर आईडी ओवर हियर, ठीक है? अब हमें यूजर आईडी मिल रही है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में, और वो भी जैसे हमने उसको सेट करी, ओके, यूजर आईडी और हमने डॉक्यूमेंट आईडी सेट करा था, वैसे ही हमको यहाँ पे मिल गया। व्हाट इज द यूज, इसको कैसे यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए? सीरियस, um okay, so let's see this. So I will say if request dot request dot cookies dot user id, okay, that is capital I capital D. If this exists, okay, request dot cookies dot user ID. Guys, are you getting this syntax? Are you getting this question mark? Why did I put a question mark? It is a null check, right? Remember null check?
If it is undefined, it will not go forward, बिकॉज अनडिफाइंड और नल की प्रॉपर्टी आप एक्सेस करोगे तो ये एरर दे देगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा. So we use question mark. It is called as null guard. Protect from these kind of errors. Guys, are you getting the point? Right? Uh, response dot cookies dot user ID. Okay. So I'll say doctor dot find by ID request dot cookies dot user ID. Okay. And and now I can say if if the doctor is there, if the doctor is there, okay, doctor is okay. Let's do the reverse part. If there is no doctor, okay, means that not move forward, right? So I can just simply return a response. I can simply return a response saying that user not found. Okay, that's it. Also, this has one more feature. Okay, we can pass the status also. Okay, let's see this. Let's see this. This will be interesting. Now the point is, I will try to do this again. I will try to do this again. Let's see. So I get the request and I'm getting the response. Okay. But the point is, let's delete it. Let's check the reverse part. Let's okay. Let's not delete it. Let's do one thing. Okay. What I will do is I will just hinder with the ID. Okay. That is it. Let's fill some random numbers. Now let's try to do something. Okay, the reject appointment is there. Let's go to network. Let's check this part. It says user not found. Okay, it says forbidden. And why was that? Because we modified it, right? The doctor was not found in the database. I hope you guys have seen this like 403 error somewhere, like forbidden. So this is what it is. Is it clear till now, guys? ये सर जो आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है Mm-hmm. सर यदि अपन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ओनली एरर ही दीजिएगा सर यदि यूजर आईडी से नहीं मिला सर अपन क्रैश हो जाएगी सर फोन करिए अच्छा, यूज़र आईडी नहीं मिलेगी तब तो ठीक है, बट कुकीज़ ही नहीं मिली तो नल डॉट यूज़र आईडी तो यस सर ठीक नो है. प्रॉब्लम यस यस डॉट नल हो जाएगा यस यस. But it will say that cannot read properties of undefined, cannot read properties of null. देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है cannot read properties of undefined. अच्छा, ये तो ठीक है, बट ओके ये क्यों हुआ? Why did this happen? ठीक है, इसको देखते हैं बाद में. The point is, let's see this. Um, टॉकिंग मोर अबाउट द नल गार्ड, आपने क्वेश्चन उठाया, एक बार देख लेते हैं इसको. सो नो लेट बी एनी रैंडम वेरिएबल. ठीक है, जिसमें आपने नल रखा हुआ है. ओके, नाउ एफ इज नल. टिल नाउ टिल नाउ इट इज नॉट गिविंग एनी एरर. ओके, सो आप कहोगे कि मुझे प्रॉपर्टी वन दो. ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पर, बट ये एरर. द पॉइंट इज एफ ए से कोई एरर नहीं आएगा आपको. एफ ए खुद नल होगा तो कोई एरर नहीं आएगा आपको, बट एफ ए डॉट प्रॉपन करोगे तो फिर एरर आएगा. यही पॉइंट है. How we can like okay,
ये तो हमारे कंट्रोल में, लाइक वी आर हैविंग दिस एफ ए इन आर कंट्रोल। एफ ए तो हमारे कंट्रोल में है कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब वो तो हमें कोड में ही दिख रहा है कि भैया नल है, तो फिर वाई वी आर डूइंग दिस। पर हमेशा हमेशा चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। कब? जब किसी सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, आप हमें क्या पता, लाइक व्हाट इज द रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू गेट, राइट? पॉइंट इज दिस। तो फिर क्या करें? तो फिर कहोगे सर लाइक, तो फिर क्या करें, मतलब अगर सर्वर ही क्रैश हो गया तो कुछ और हो गया, इन दैट केस आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये करोगे फिर इट विल बी टोटली फाइन। ठीक है, अनडिफाइंड ही देगा, बट यू विल नॉट गेट एनी एरर। ओके, आई होप इट्स मेकिंग सेंस। ये सर इसे क्यूरी ही बोलते हैं ना सर? इसको नल गार्ड बोलते हैं इसको। मैं नल देख लेता हूँ। नल गार्ड या फिर नलिस क्वेल्जिंग है, कुछ तो बोलते हैं नलिस क्वेल्जिंग। ओके, नहीं क्वेल्जिंग नहीं है। क्वेल्जिंग इज समथिंग डिफरेंट, वी टॉक अबाउट दिस लेटर। ठीक है, ये थोड़ा और डिफरेंट है। ओके, लेट मी मार्क दिस, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, या ऑप्शनल चेनिंग, यस यस, आई रिमेंबर दिस इज ऑप्शनल चेनिंग, राइट? ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये सर ये सर। विल टॉक अबाउट इट, मतलब मैं देखता हूँ उसको सारा देखता हूँ, देन विल कलेक्टिवली टॉक अबाउट। द पॉइंट इज, दिस इज हाउ यू कैन मैनुअली ऑथेंटिकेट एवरी राउट प्रेजेंट। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि भैया आप हर राउट के साथ, जो आपने इस अपॉइंटमेंट वाले के साथ किया, राइट, जो आपने यहाँ पे किया है, ये तो आप हर कंट्रोल में लगा सकते हो, राइट? ये तो आप कर ही सकते हो। और एक कॉमन फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, सो लाइक कॉमन फंक्शन कैसे बना सकते हैं? देर इज़ वन मोर वे टू हैव मिडिल वेयर्स। ठीक है, एक और जगह है जहाँ पे आप मिडिल वेयर दे सकते हो। आपको राउट्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट? कि अगर आइडेंटिफाइड यूज़र नहीं है तो फिर वो रिक्वेस्ट ना कर पाए, तो फिर आपको राउट लेवल पे ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। कंट्रोलर लेवल पे लगा सकते हो, बट कंट्रोलर में फिर आपको साथ जितने कंट्रोलर्स बनेंगे समझ, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, कंट्रोलर्स का काम है सिर्फ वट एवर द वर्क दे आर असाइंड डू दैट। ठीक है, ये काम कंट्रोलर का नहीं है जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, ये तो यूजर ऑथेंटिकेशन का पार्ट हो गया, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, राइट? इट मस्ट वेदर इन लॉग इन और समथिंग एल्स, बट यहाँ रखना पड़ रहा है। अनदर वे इज, एक और तरीका ये है कि आप अपॉइंट वाले राउटर पे, राउटर लेवल पे, आप सीधे राउटर लेवल पे ये काम कर सकते हैं। और लाइक पर्टिकुलर राउट पे नहीं, लेट्स से कि आपको पूरा अपॉइंट वाला जितना राउट है वो सब प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एंड लेट्स से कि आपको वी वन ही पूरा पूरा प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, लाइक ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप एक और आर्गुमेंट ले सकते हो उनके बीच में। यू कैन से दैट ऑथेंटिकेट। ठीक है, एक फंक्शन आप लिख सकते हो ऑथेंटिकेट। एंड लेट्स क्रिएट अ ऑथेंटिकेट फंक्शन। ठीक है, आप इसको यहाँ पे बना सकते हो कन्फर्म ऑथेंटिकेट। ओके, डॉट जेएस। एंड we can have a function module dot export dot authenticate authenticate equals to request response next। ये आया रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ठीक है, वट एवर लॉजिक वी आर हैविंग इन आर कंट्रोलर, जो भी लॉजिक हमारे कंट्रोलर में है हमारे पास, यहाँ पे not at this part where we had that. Okay, in the appointment, so we have this part here. Let's cut this part.
and let's put it here. Okay, obviously, like Dr. models is needed. Then we will do this. Okay, and finally, once this is done, okay. So we return this. Okay, so we return at this point. Otherwise, अगर ये नहीं है, we can simply call next. The next call को सकता हूँ. And I have this authenticate here, and let's have this authenticate here also. It says authenticate is not defined. Obviously, it's not defined. So authenticate, because it's defined now. Valid only is in function, obviously. Okay, makes sense. Okay, let's set this. ठीक है, ये हुई हमारी रिक्वेस्ट. नाउ ऑल अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, जितनी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है सब वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, राइट. दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट वी वांट. and and yeah, we are having this part on the login. ठीक है, ये तो login पे है हमारे पास. Also, let me put a console that we are using this function so we have an idea. Console.log. So also we are getting this acceleration. Okay, let's try to accept this. Okay, let's try to reject this. Okay, two calls are made. Let's see this part. Now you can see that I am having it over. Okay, अब मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे मेरे पास. No, I can just insert it anywhere I want. क्या है, ये मैं सारे डॉक्टर्स के कंट्रोलर्स पे लगा सकता हूँ. यहाँ पे प्रोफाइल पे लगा सकता हूँ. ठीक है, प्रोफाइल प्रोफाइल पेज तभी दिखेगी जब वो यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका हो, राइट. अदरवाइज नॉट दिस वन. ऑथेंटिकेट फंक्शन ऑथेंटिकेट. ठीक है, फिर डॉक्टर की प्रोफाइल जब आप करोगे, ओके, सो इट शुड बी हियर. ओके, सीरियस. अदरवाइज अगर अगर ये नहीं होगा, ओके, लेट्स डू द चेंज. ठीक है, let's hit this. Says it cannot be reached because okay, oh, okay, um obviously, obviously, okay, makes sense, but why did it crash? It was not supposed to crash. If it didn't find, right, why did it crash? Hmm. Okay, makes sense. Obviously, we didn't expect to pass this to dollar object ID field for the value. Hmm. Okay, makes sense. Okay, we'll see this. Okay, we can wrap this complete and try catch, and we can see this part. But the point is, you're getting the point, right? Like how we can like put authentication at the what do you say, like the router level. Okay, so you can protect a complete set of route instead of a single one. I guess, is this part clear till now? Yes. Okay, see this. Okay, this is working fine now. Okay, so after every login it will be fine, right? It will be fine. Okay, and you can go to this like this page anytime you want. Okay, any doctor profile you can attend.
Okay, the point is here comes the next thing. Let's try to log out. Okay, let's create a logout function. Let's create a, and why this next is there, I was hoping that you guys would ask this question. I guess the request response is clear to you guys, because every request received to Node.js server will have two objects for sure. One is the request and another is the response. So your controller, your routes will always get these two objects for sure, request and response. But why this next? Why did I call this? And where this next is coming? Okay, first of all, tell me, request response is clear, right? Who is supplying this request response? Guys, Node server is supplying this request response object to us. Basics, basics, guys, basics. Okay, try to ask questions. And like, don't feel disappointed. I know, like, uh, this is very pretty basic. Okay, but yeah, everything, I will try to tell everything, but that's not how it works, right? You have to be aware. Okay, कि ये चीज़ क्यों यूज़ हो रही है, what are the alternatives, why is this, why this. Okay, you have to develop that uh, attitude. Okay, so you have to just go and check things. Okay, let me like do this part. So next comes from, so whenever आप किसी मिडलवेयर जो भी आप फंक्शन यहाँ पे लिख रहे होते हो ना, तब आप एक नेक्स्ट फंक्शन लिखते हो या फिर कोई कॉल बैक लिखते हो। इसका काम ये होगा कि दिस फंक्शन विल शिफ्ट द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टू नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का काम हुआ कि ये अगले फंक्शन को वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज दे, यही काम करेगा ये। मेक सेंस? आप सिर्फ रिटर्न कर दोगे, इफ आई यूज राइट दिस फंक्शन और मैं सीधा रिटर्न कर दूं इस फंक्शन से, तो फिर तो अगर मैं सीधे रिस्पॉन्स भेज दूं, ओके, सो इफ आई जस्ट डायरेक्टली सेंड द रिस्पॉन्स, तब इस फंक्शन पे क्यों आएगा? वो साइकिल तो कंप्लीट होगी ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला। वो तो हमें करना नहीं था, हमें तो पहले ऑथेंटिकेट करना है, फिर ये वाली कंट्रोलर चलानी है। तो मिडिलवेयर्स को एक और स्पेशल थर्ड आर्गुमेंट मिलता है, दैट इज नेक्स्ट। ठीक है, जो कि आप कॉल करते हो। ठीक है, जो कि आप कॉल करते हो, एंड दिस इज व्हाट दिस सिग्निफाइज दैट कि like it will pass the request response to the next controller. Okay, I've not seen this part. If I don't do this, let's try this also. So is this automatically handled to go to the next controller, or what's the case? Okay, एक बार देखते हैं इसको. This is fun. Okay, so I will do this part, and yes, see this, guys, see this. This is interesting, right? You see the last request, it is pending. ओके, अब बताओ ये पेंडिंग क्यों? अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों पेंडिंग है। सर क्योंकि गेट रिस्पॉन्स के बाद नेक्स्ट मतलब जो एग्जीक्यूट करना यस, यस, बिल्कुल सही। तो ये जब तक मैं नेक्स्ट कॉल नहीं करूँगा तो ये रिक्वेस्ट आगे जाएगी नहीं, और जब तक जाएगी नहीं तो फिर तब तक काम नहीं होगा। देखो, हो भी गया। ओके, दिस इज डन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया। मिडिलवेयर समझ में आया गाइस? व्हाट इज मिडिलवेयर? तो ये था अपना सेल्फ मेड मिडिलवेयर, ये हमने खुद का मिडिलवेयर बनाया, राइट? आप आप अपना मिडलवेयर भी बना सकते हैं। ओके, वी आर यूजिंग लाइब्रेरीज, ठीक है, हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, सही बात है, हम एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं। एंड इफ़ आई टेल यू दैट नोड इज़ सो पावरफुल, नोड इतना पावरफुल है, उसको किसी किसी पैकेज की ज़रूरत नहीं। आप ये जितना काम आप ये कर रहे हैं, दैट कैन बी डन विदाउट सिंगल पैकेज। ठीक है, आपको किसी पैकेज की जरूरत नहीं, बट लाइक टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर अस
एज वी आर लाइक इनिशिएटिंग, ठीक है, हम एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ द थिंग्स आर वी आर यूजिंग। ओके, तो ये है लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन मिडलवेयर, ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। हो सकता है लाइक यू वांट टू सेंड नोटिफिकेशन, आप ब्यूटीफुल सा नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हो हर रिक्वेस्ट पे, ऐसा टोकन ऐसे फ्लैश करे। आई गेस इट इज़ इन लेक्चर्स ऑल्सो, ठीक है, आप ऐसा कुछ कर सकते हो। um, या फिर यू आर प्लानिंग टू शो अ लोडर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, आप लोडर दिखाना चाहते हो जब रिक्वेस्ट जाए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन। Okay, like try it out. Let's add one more functionality. Okay, then we'll discuss about passport, और फिर उसको next week में we'll be talking more about passport and the strategies, ठीक है। हम सोशल ऑथेंटिकेशन करेंगे, गिटअप करेंगे, फेसबुक करेंगे, okay? गिटअप फेसबुक, ओके, लेट्स ठीक है, गिटअप गूगल या फिर गिटअप फेसबुक में से कुछ करेंगे, ठीक है। ऑल्सो JWT इज ऑल्सो देयर, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। ऑथेंटिकेशन इज प्रिटी मच वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो भी हमने खुद देखा, ठीक है, उसी तरह। अभी मैं क्या करूँगा कि आई विल जस्ट, so we are okay, we are not done with this part, one thing is remaining, let's create a common logout route, ठीक है, एक लॉगआउट राउट बनाते हैं जिसको हिट करने पे यूज़र जो है वो लॉग आउट हो जाए, ठीक है। लॉग आउट मतलब कि उसकी आइडेंटिटी नहीं नहीं होगी। हाउ कैन आई डू दिस गाइस, कैसे कर सकते हैं इसको? सही बात, बिल्कुल सही बात, ठीक है, विज डिलीट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है, डिलीट कर देंगे या फिर वहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू डाल देंगे या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, ठीक है। सो लॉग आउट, और इसके लिए हम बनाते हैं एक लॉग आउट, ओके, लॉग आउट लॉग आउट हैंडलर, नाम रख के लॉग आउट हैंडलर, and let it be inside a controller. Let's create one more file, let's name it shared, ठीक है, इसमें shared controller होंगे तो सबके साथ shared होंगे, and I have the index.js file, ठीक है। So module dot sports dot log out handler, और इसके अंदर होती है रिक्वेस्ट और इसके अंदर होती है रिस्पॉन्स, और आगे है हमारे पास only thing we have to do is return, okay, first of all check it out, if request dot cookies, if request dot cookies, okay, dot user id, अगर ये चीज़ है, okay, I will say um, return, okay, before returning response.cookie, okay, user id, okay, do we have the delete function also? Let me check, not cached, okay, okay, ठीक है, उसको देखते हैं, अभी के लिए ये करते हैं, so I have a function, let's start user dot cookie, user id, let's put it to this, okay, makes sense, and a response return response dot redirect, response return response dot redirect स्लैश, ठीक है, होम पेज पे भेज दो, मतलब लॉगिन पेज पे भेज दो, वट एवर बी द लॉगिन पेज, आप उस पर उसको रिडायरेक्ट कर दो, अदरवाइज अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो सिर्फ रिडायरेक्ट। एंड लॉग आउट हैंडलर, वेयर वाज इट, इट इज हियर, सो log out handler, and that is it. Not router dot use, router dot get, right? Slash logout.
तो ये हमने इसकी कंट्रोलर बना ली, हमने इसकी राउट भी क्रिएट कर ली। व्हाट एल्स इज रिमेनिंग गाइस? क्या बचा है? वी नीड टू प्लेस दिस लॉग आउट बटन, ठीक है, तभी तो क्लिक करेंगे पेज से। कैसा रही विथ मी? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, ओके। सो ओके, आई विल पुश द चेंजेस, ठीक है, आप इसको देखो, ट्राई टू ऐड समथिंग, रीड समथिंग। So I will tell you one interesting part. When I was learning this passport JS, okay, 2 days I was stuck and the change was on a single line. Okay, 2 दिन तक मैं सोच रहा था कि ये चल क्यों नहीं रहा, like back in 2020 जब मैं ग्रेजुएट हुआ। So I was doing the same thing और 2 दिन तक मैं सोच रहा था कि ये चल क्यों नहीं रहा, और मैंने सिर्फ पासपोर्ट इनिशियलाइज नहीं किया था, इस वजह से वो नहीं चल रहा था। But yeah, like the point is, I never like left things, ठीक है, because I knew like कुछ missing है, okay. So keep code under your control, and there will be a way, okay. There's a vast support for this one, okay. Support भी अच्छी है Node.js की, so you just do not have to fear. Okay? Try to develop things, try to implement things, okay. Try करो sir, okay. You have the logout button. Let's try to do the request. Okay, so I've been redirected here. Okay, यहाँ पे देखते हैं पहले, ये चला गया नहीं, ठीक है। ओके, ये हो गई डिलीट, ठीक है, बट can I go back here? Okay, I can go back. Ah, okay, 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 okay. Hmm. Now, when I make the request again, it is now stuck. And why is that? Because of the authenticate function. And if authenticate function does not find the thing, authenticate function does not find that thing, so it didn't find this. It called next. Oh my god. Okay, this is not good. Okay, because uh, if we do not find this ID, right? Okay, if we find this ID, all good. But what if we do not find this ID, right? So we have to do for that also. It means that the same thing we are returning here, that is to be returned to it. So at this point, make sense? Okay. Okay, it says user not found. Obviously, we need to create a separate page for this. This is not looking good. But yeah, the point is that's fine. Well, successfully created the logout button. Let's log out again. So I will say this. I will say this. Let's see if I can log in again. Yeah, obviously I can log in. Let's log out. Yes, I can log out again. And and the point is yes. Okay, what I was going to discuss. Okay, currently we are setting ये like this to empty string, but ठीक है, but empty string नहीं देखते। Let's find a way how to delete cookie. Delete cookie. Uh, no, yes. Okay. How? Okay. Let's try this. Response dot clear cookie. Where's the logout controller? We have the logout controller at this point, and interestingly, okay, this point response dot not a cookie, clear, clear
Clear cooking. That's what to get right? Response dot clear cookie and the key. Yep, makes sense. Let's try this. Let's log in. Okay. Where's the doctor? It's doctor, we are getting the cookies. Okay, let's log out. Yeah, makes sense. We are getting the cookies cleared. Okay. So this is what we can do. So we can use this login button anywhere. It will clear the user ID from for any doubt. I hope it makes sense. Any issues still here, guys? Yes, yeah. So was it interesting, guys? मजा आया? Okay. कुछ सम कुछ सीखा आज? Okay. मतलब ठीक है, इसके बाद जो भी करेंगे ना, जो भी पासपोर्ट जैसे आप, इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम वही हैं जो अभी तक हमने देखी, ठीक है। तो मतलब पॉइंट ये है कि हाँ, यस सचिन, कौन? सर मैं ये पूछ रहा था सर, आप इंस्पेक्टर आइडेंटिफिकेशन यूज़ करते हैं सर, मतलब इससे अपडेट वो थोड़ा बता दीजिए। ठीक है। हम कभी यूज़ नहीं करते सर, मतलब ऐड इससे क्या होता है? अच्छा ठीक है। टाइम अप हो गया बस। ओके, एनीवेज ठीक है, देखो मैं कुछ और दिखाता हूँ, ठीक है, ये छोड़ो, कुछ और हैवी चीज़ देखते हैं। जहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहा हो, ठीक है, जैम्बो टू देखते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। ओके, सो ये है नेटवर्क, ठीक है। थैंक यू, 850। ओके, सो ये है हमारा नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सबसे पहले ये वाला बटन, ठीक है, ये है रिकॉर्ड बटन, ठीक है। ये हमेशा रेड होगा, इसका मतलब कि ये रिकॉर्ड कर रहा है कि नेटवर्क में क्या क्या एक्टिविटी होगी। मतलब कि इस पेज से रिलेटेड जितने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जितने क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होंगे, वो सारे यहाँ लिस्ट होंगे, सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट होने वाले हैं। जैसे कि अभी एक हुआ, ठीक है, ये खुद से हुआ, हो सकता है टाइमर लगा हो या फिर कोई और तरीका हो, ठीक है, जैसे टाइम आउट हो या फिर मतलब जो भी हो, ठीक है। द पॉइंट इज कि ये सारी, तो ये है आपके रिकॉर्ड वाली, ये क्लियर बटन है, इसका जरूरत नहीं है। फिल्टर, ठीक है, अभी अभी जाने की जरूरत नहीं है। ये है आपकी सर्च आइकन, अगर आप किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को सर्च करना चाहते हो तो। प्रिजर्व लॉग, पेज रिफ्रेश पे आप चाहते हो कि ये हटे ना, क्योंकि मैं हटा दूंगा तो ये पेज रिफ्रेश पे ये चला जाएगा, ठीक है, फिर उस पेज का आएगा, तो मैं वो नहीं चाहता, तो ये प्रिजर्व लॉग पे आप सेट कर दो इसको। डिसेबल कैश करने का मतलब होता है कि कुछ पेजेस आपके कैश में सेव होती हैं, ठीक है, कुछ पेजेस आपके कैश में सेव होती हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक रिफ्रेश बटन पे, तो आपको मिलेगा नॉर्मल रिलोड, हार्ड रिलोड, एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिलोड, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी राउट पे जाते हो, तो अगर आप पहले खोल रखिए तो बहुत जल्दी लोड होती है, ठीक है। एक चीज़ एक्सपीरियंस आपने करी होगी, अगर नहीं करी तो एक बार ट्राई करना, क्योंकि वो कैश में सेव होती है, ठीक है। तो वहीं से उठा के आपको दे देता है। एक तो ये हो गई। फिर है आपका नो थ्रॉटलिंग, ठीक है। नो थ्रॉटलिंग, नो थ्रॉटलिंग में आप स्पीड सेट कर सकते हो अपने नेटवर्क की, फास्ट 3G, स्लो 3G पे कैसा दिखेगा, ठीक है, ऑफलाइन का ऑब्वियसली नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप, कस्टम ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब कि कितना डाउनलोड अपलोड स्पीड चाहिए, वो सारी सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें, लोकेशन सेट कर सकते हो, ठीक है, ये बाद में देखते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग यू विल नीड नाउ इज, हमें एक तो इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, हमें रिजर्व लॉक की ज़रूरत है, थ्रॉटलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, डिसेबल कैश की ज़रूरत हो सकती है, इसकी ज़रूरत है, इस बटन की ज़रूरत है, और इस बटन की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे है कि किस टाइप की रिक्वेस्ट आपको देखनी है। ये इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने पहले से नहीं पढ़ रखी है, ठीक है। आप किसी भी रिक्वेस्ट के लिए, आप किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक तो ऑल हो गया, ठीक है, जिसमें ईजीएस फाइल हमारी एज ए HTML बन के आ रही है, ठीक है। एक तो वो तरीका है। एक तो जो कि हम रिस्पॉन्स डॉट रेंडर से भेज रहे हैं, तो वो आपको ऑल में दिख रही होगी, ठीक है, या फिर आपको डॉक में दिख रही होगी। लेकिन जो हम फेच रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट में नहीं आती है, ठीक है। वो एक फेच रिक्वेस्ट होती है या फिर XHR रिक्वेस्ट होती है, तो वो देखना है तो ये सारे फिल्टर्स आप देख सकते हो। आपने JS फाइल भेजी है, आपने CSS फाइल भेजी है बैकएंड से, ठीक है, अभी तक तो हमने CSS भेजा नहीं, तो अभी दिख नहीं रही है, इमेज है, मीडिया है, फॉन्ट है, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। किसी रिक्वेस्ट को कैसे देखना है, आप किसी भी रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, किसी किसी पे भी, ठीक है।
क्योंकि आपको मतलब सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा ही होंगी, वो कंपलसरी हैं, उनके बिना वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऐसा है कि जो प्रेजेंट होंगी। तो आपको हेडर्स हमेशा मिलेंगे, पेलोड कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट या फिर क्वेरी भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलेगी कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी क्या भेज रहे हो पेलोड के अंदर, या फिर आप कुकीज़ में क्या, सॉरी कुकीज़ में, क्वेरी में क्या भेज रहे हो, पैरामीटर में नहीं, क्वेरी में आप यहाँ पे क्या भेज रहे हो, ओके। आई होप एक और चीज़ भी होगी, अच्छा नहीं, ठीक है, एनीवेज बाद में देखते हैं। प्रीव्यू में आपका रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है। ये देखो मेरा यूज़र आईडी, यू सी दिस इज़ द यूज़र आईडी विच इज सेंड बाय गूगल, ठीक है। गूगल यूज़र आईडी सेंड करता है कि भाई ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है भी कि नहीं, रिस्पॉन्स आ रही है, ठीक है। ये रही कुकीज़, ये रही गूगल की कुकीज़ जो गूगल ने सेट करी है। ये रिक्वेस्ट कुकीज़ हैं जो रिक्वेस्ट के साथ आई हैं, और ये रिस्पॉन्स की कुकीज़ है जो ये पेज खुद भेजेगा, ठीक है। आप रिस्पॉन्स में भी कुकी भेज सकते हैं, पर ठीक है वो हमारे अभी काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ यही है कि हम हेडर्स में, रिस्पॉन्स हेडर्स बाद में देखेंगे, ठीक है। हमारे काम का यही है कि हमें, ये देखो ये कुकीज़ है ना, ये गूगल गूगल सेट कर रहा है, यही चीज़ हमने अभी खुद करी है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। तो गूगल मुझे ऐसे ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। मैं किसी रिक्वेस्ट की सक्सेस फेलियर कैसे पता करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको ऊपर ही यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। स्टेटस कोड देखता हूँ मैं, रिक्वेस्ट मेथड देखता हूँ, रिक्वेस्ट यूआरएल देखता हूँ, ठीक है। और फिर अगर उससे भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है कि क्या गड़बड़ है, तो फिर मैं रिक्वेस्ट हेडर को देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़, ये बात गलत जा रही है, मैंने कुछ गलत भेज दिया है यहाँ पे, या फिर मेरी कुकीज़ ही नहीं जा रही हैं, ठीक है। एक चीज़ है क्रॉस रीजन रिसोर्स पॉलिसी, ठीक है। हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। जब हम रिएक्ट पढ़ रहे होंगे तब हम उसको देखेंगे। फिर हमारा यूज़र एजेंट जाता है कि कभी, अच्छा, सर्वर को कैसे पता चलता है कि लाइक, क्योंकि आपने देखा होगा कि फेसबुक आप सर्च करते हैं, अभी तो नहीं, पर पहले क्या होता था कि m.facebook.com होता था जब आप मोबाइल में खोलते थे, बट आप सिस्टम में खोलते थे तो सिर्फ facebook.com होता था। तो फिर सर्वर को आखिर पता कैसे चलेगा कि रिक्वेस्ट फ़ोन ने करी है कि डेस्कटॉप ने की है? तो वो पता चलती थी रिक्वेस्ट हेडर से ही, जैसे कुकीज़ आइडेंटिफाई हो रही है ना, वैसे ही वो सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है। जैसे इसने इसने आइडेंटिफाई करा हुआ है इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि ये कोई गूगल क्रोम है जिसने रिक्वेस्ट करी हुई है, और ये सारा उसका सिस्टम नाम है, ठीक है। तो ये सारी डेटा जा रही है, लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट मतलब ठीक है, आई ओके, बाकी चीज़ें मैं आपके ऊपर वो करता हूँ, छोड़ता हूँ। आप देखो इसको, इस पर आप राइट क्लिक करके देखो, आपको किसी रिक्वेस्ट को कॉपी करना है, ठीक है। You see this copy all as Node.js fetch, copy as Node.js fetch, here's browser cache, reply XHR. Like some of the things I have, मैंने खुद भी यूज़ नहीं करी है, ठीक है, to be honest, but yeah, this is the point. बाकी देखेंगे, ठीक है। बाकी मतलब वही है, लाइक एज यू मूव ऑन डेवलपमेंट के साथ आप सीखोगे, ठीक है। बट फॉर नाउ दिस इज द ओनली थिंग यू रिक्वायर, एंड विल सी। Okay, guys. Thank you. Okay, before going, one more last attendance. Where is the seat? Address 1506 22, and we will populate. Okay, guys. Please mark your attendance and let's meet next week. I'll push the changes. Okay. I suppose आपके पास लिंक है, GitHub लिंक, ठीक है। हाँ सर है। अदरवाइज ऑब्वियसली आप मेरा रेपोजिटरी का नाम जानते ही हो, तो विजिटेड देयर, बहुत सारी पुशेस बना रही है उन्होंने। आप किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोन करो जो भी आपको अच्छा लगे, ट्राई टू सी द कोड, या फिर मतलब नहीं हो, मतलब उससे भी अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं वहाँ पे, आप ट्राई टू गो सी देयर कोड्स। ओके गाइस, ओके, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, बाय। तो सर वन मोर पॉइंट, पिछले वाले सीओ पे नोट जेस की रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, ठीक है। आई लाइक आई एम अपलोडिंग ऑल ऑन द यूट्यूब, ठीक है। मैं आपको चैनल की लिंक भेज देता हूँ, ओके। डेवलपर्स को ठीक है, ठीक है। लाइक द ओनली थिंग यू विल नीड इज़ कि जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बिकॉज़ मतलब उसके पहले तो काफ़ी बेसिक ही था,
तो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले की 5-6 वीडियोज़ है मैं देखता हूँ। आई विल शेयर द चैनल लिंक, आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। ओके, ओके गाइस, बाय।